Good morning, children. Let's start chapter 7 of your Wind Chimes book. This is Stone Soup. So let's read the chapter Stone Soup. First, you can see here some pictures are given and the words are jumbled. Okay, so look at these vegetables used to make soup. The words are all jumbled up. Unscramble them. So can you guess the name, children? This one is pumpkin. 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 This is corn. 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 Right here in the given space. This is peas. 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 This one very easy for you. These are carrots. These are carrots. Carrots. Okay, carrots. So now you have to find out the correct name of other things given here and write in the given space. तो ये नेम अनस्क्रैम्बल करके आप लिखिए. ओके. Now read the story. Characters. This is a kind of play, children. Here we can see the characters are storyteller, soldiers, 3 soldiers, Ivan, Benny and Leo. Villagers, 3 men and 3 women. Okay, so these are the characters of this story. Scene 1, a village. This is the first scene. Storyteller. Long ago, 3 soldiers were returning home. They were tired and hungry, so they were happy when they saw a village. Ivan. Thank God we have reached a village. We are sure to get food to eat and beds to sleep in. Storyteller. But the villagers feared strangers, so they had hidden their food. They hid carrots under their quills and bread in the hay. So quills is one kind of bed cover that we use in winter to keep ourselves warm. Okay, so यहाँ पे क्विल्ट का आप पिक्चर देख सकते हैं. क्विल्ट जो कंफर्टर की तरह होता है जो हम लोग विंटर में यूज़ करते हैं. तो सारे विलेजर्स क्या किए, कैरट्स को क्विल्ट के अंदर छुपा दिए, ब्रेड्स को है. Leo. Let us knock on the first door. Leo knocks and a woman speaks. First woman. Who is it? Leo. Kind lady, we are 3 hungry soldiers. Can you share your food with us? First woman. Share? I have nothing to share. Ivan. We might be luckier at the next house. Ivan knocks and first man comes out. First man. What do you want? Ivan. Kind sir, could you please give us some food? First man. I have nothing to give. We had a poor harvest. Storyteller. Whoever they asked had no food to give. Ivan. Friends, at least give us a big pot, some water and 3 round stones. We will make stone soup. So far in this story, children, we have come to know that long ago, 3 soldiers were returning home and they were hungry and tired. So they wanted some food and shelter to live, to sleep, and when they saw a village, they became very happy. Okay, but when they reached the village and asked for food, villagers refused because they were frightened. Okay. So
you can see they hid their food like carrots, bread, everything. And the three soldiers were Ivan, Benny and Leo, and they knocked at the doors and asked for food, but everyone refused. The villagers were not agreed to give them food, okay, to share food with them. They were not very willing to share their food with the soldiers as they were frightened of them. तो फर्स्ट पेज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि थ्री सोल्जर्स थे जो कि जब रिटर्न कर रहे थे अपने होम के तरफ, तो उन्होंने एक विलेज देखा। तो वो बहुत ही हंग्री थे और स्लीपी भी थे। तो वो जब एक विलेज देखे वो हैप्पी हो गए और उस विलेज में जाके वो सोल्जर्स फूड मांगने लगे। पर विलेजर्स जो थे वो सोल्जर्स को देख के डरे हुए थे। सोल्जर्स थे वो लोग डरे हुए थे। स्ट्रेंजर्स थे वो लोग डरते थे। स्ट्रेंजर्स यानी कि जिनको वो पहचानते नहीं हैं, ऐसे लोगों से वो विलेजर्स डरते थे। तो सोल्जर्स को देख के वो लोग डर गए और वो लोग अपना फूड शेयर करने में राज़ी नहीं थे। वो लोग क्या किए, अपने फूड को छुपा लिए, जैसे ब्रेड, कैरट्स, सब कुछ छुपा लिए। और ये सोल्जर्स कौन कौन थे? लियो, बेनी एंड इवान। तो लियो ने जैसे कि देखो फर्स्ट डोर में जब पूछे तो एक वोमेन निकल के आए तो उन्होंने बोला नहीं, हम कुछ भी शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर इवान दूसरे डोर में जाके पूछे, वहाँ से एक मैन बाहर आके बोले कि नहीं, हम लोगों का पुअर हार्वेस्ट हुआ है। पुअर हार्वेस्ट यानी जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं ना, फार्मिंग करते हैं, तो वो अच्छा नहीं हुआ है, हम लोग कुछ भी शेयर नहीं कर सकते। Lastly, we can see here Ivan said, friends, at least give us a big pot and 3 round stones. हम लोगों को कम से कम ये तो दे दीजिए, क्या? एक pot, some water and 3 round stones. So they are going to make stone soup. Now we have to see how they made their stone soup. Next page. Storyteller. The villagers gave them this and gathered around to watch. Soon a fire was lit and the pot placed on it. Benny puts the stones in the water. All we need now is salt. Second woman, I will get salt and some pepper too. She brings the salt and pepper. Ivan putting in salt and pepper in tasting some. Tasty. Leo, it would be tastier with a few carrots. Benny continues, and some cabbages. Third man, I have got some carrots. Third woman, and I some cabbage. Let us get it. They go off and return with the vegetables. What are the vegetables? Cabbages and carrots. Leo puts in the vegetables. A few scraps of meat would make the soup fit for a king. Third woman, meat. I will get some. So you can see, children, in this way they are asking of things that were needed to make their soup, and the villagers were giving happily those things. Can you see here? So first Benny said that the stone soup was almost ready, but only thing was needed is salt. And second woman was happily giving them salt and pepper, and then Ivan said it was very tasty, and Leo said that it would be much more tastier with some carrots.
And Benny said, some cabbages also. So third man gave them carrots, and third woman gave them cabbage. Now Leo said that a few scraps of meat would make the soup fit for a king. Okay, and third woman gave them some meat. तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हुआ, स्टोन सूप वो लोग बनाना स्टार्ट किए थे। वो लोग क्या बोले थे कि 3 राउंड स्टोन दे दीजिए, एक बिग पॉट दे दीजिए, सम वाटर दे दीजिए। जब आप लोग हम लोगों को फूड नहीं देंगे तो इतना दे दीजिए ताकि हम लोग स्टोन सूप बना ले। तो स्टोन का भी कोई सूप बनता है क्या? नहीं ना। तो फिर क्या क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे देखें कि जैसे वो लोग स्टोन सूप बनाना स्टार्ट किए तो बेनी ने बोले ये स्टोन, तो फिर विलेजर्स गैदर हो गए वहाँ पे देखने के लिए, अरे ये भी कैसे हो रहा है, स्टोन सूप क्या है। तो फिर बेनी ने बोला कि ये ऑलमोस्ट रेडी ही है, सिर्फ क्या चाहिए, थोड़ा सा सॉल्ट। तो वैसे ही सेकंड वुमन देने के लिए राजी हो गए। तो इवान ने फिर बोले कि बहुत ही टेस्टी हुआ है, सिर्फ और क्या चाहिए। लियो ने बोले थोड़े से कैरट्स चाहिए। बेनी ने बोले अगर थोड़ा कैबेज भी हो जाता तो बहुत अच्छा होता। ऐसे करके और थर्ड मैन राजी हो गए, कैरट्स दे दिए। थर्ड वुमन जो थे वहाँ पे वो कैबेज दे दिए, ठीक है। और फिर लियो ने बोला अगर थोड़ा सा स्क्रैप पीस ऑफ मीट हो जाता तो ये सूप तो फिट फॉर किंग, यानी किंग के खाने जैसा उतना ही अच्छा बन जाता, ठीक है। तो किन्होंने दिए, देखो थर्ड वुमन ने मीट दिए। तो हैप्पीली द विलेजर्स वर गिविंग दोज थिंग्स needed to make the soup. Now next page. You can see the picture here, children. The soldiers and the villagers. Third woman goes off and returns with some meat. Ivan, stirring the meat in. Soup will be ready in a few minutes. Benny, spread the rug. Benny spreads a colorful blanket on the ground. Benny, time to eat, folks. Get some bowls. Second man, I will bring them. He goes off and returns with bowls and spoons. Ivan, if only we had some bread to go with it. Third man, I have some bread just right for soup. He goes off and returns with a basket of bread. Storyteller. Soon everyone was happily eating. From now, no one would go hungry. They had learned how to make stone soup. This is a Russian folk tale. A Russian folk tale. So children, you can see. Then Ivan said that the soup was almost ready, and Benny asked for some bowls. Then second man bring the bowls, and Ivan said they had all things, but if they need some breads. Okay, they need some breads. Third man returns with a basket of bread. And in this way, children, everyone became happy and they enjoyed the stone soup. Was the soup really made with stone, do you think? No. So can you name the ingredients they used to make their soup? Can you name the ingredients? तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब मीट मांगे तो कौन क्या दिया था, ये आप लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ओके, थर्ड वुमन ने क्या दिए थे, मीट दिए थे। फिर बेनी ने बोले कि कुछ बोल्स चाहिए सूप को खाने के लिए। सेकंड मैन जाके बोल्स लेके आए। इवान बोले कि सब कुछ तो हो गया है,
अभी थोड़ा ब्रेड हो जाता इसके साथ ना तो फिर ठीक था, थोड़ा ब्रेड अगर हो जाता। थर्ड मैन गए और एक बास्केट भर के ब्रेड लेके आए। तो ऐसे वो लोग सभी हैप्पी हो गए और सभी वो लोग हैप्पीली वो सूप को एंजॉय किए, और कोई भी इसके बाद से हंग्री नहीं लौटता था, क्योंकि सब ने क्या सीख गए, स्टोन सूप बनाना। पर ये सूप तो स्टोन से नहीं बना था ना, हम लोगों को पता है। ओके, तो आप लोग बोल सकते हैं कि सूप बनाने के लिए क्या क्या यूज़ किए थे सोल्जर्स ने, क्या क्या मांगे थे और कौन क्या दिए थे, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ये एक रशियन फोक टेल है। ओके, रीड द स्टोरी अगेन चिल्ड्रेन, रीड द स्टोरी अगेन, and in our next class we will complete the exercise of this chapter. Thank you.